as we are already in the market since last 25 years. So we hope that from this exhibition our brand will become even more popular. They have a very good footfall and it grows by each passing year. The response we got, it was very tremendous. CWE has always been so close to my heart. All metal and mineral industries people will come and they will visit us. They started visiting us rather. We are getting good response from the morning. Exhibitions are really helpful in terms of getting a network with the customers. At the same time to understand how the technology is advancing and what is the future holding for us. हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि इतने कस्टमर हैं। सारे कस्टमर जितने बिजनेसमैन हैं इंडिया के वो सारे यहाँ पे आ रहे हैं। कि आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और जो बायर्स हैं, डीलर्स हैं, जो यहाँ आते हैं, जो नहीं पहुँच पाते हैं, तो उनको लिए एक ही सजेशन है कि आप आएँ, आकर एक्सप्लोर करें अपने नॉलेज को, जो प्रोडक्ट्स आप नहीं जानते हैं उनको भी जानें। These exhibitions are mainly a launch pad, sales को boost करने में बहुत successful रहता है हमारा। This time the show is beyond the expectation. There are a lot of visitors here. Yeah, it's my first time here. What we were expecting is like we are getting more than that. When you visit such exhibitions, you tend to look on different technologies which are coming up, which can definitely help the industry to be more profitable and more economical in sense of production. It is the best platform to launch a new product, new brand. I was not expecting that so much footfall yesterday. This industry is growing year on year, and the projections are that in the next 10 years it's going to grow even more than 30 to 40%. यहाँ पे सारी पब्लिक आती है ऑल ओवर इंडिया की, प्लस सराउंडिंग जो कंट्रीज है जैसे कि नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, वहाँ से भी आते हैं लोग, तो हमें काफ़ी बेनिफिट मिलता है. Of course, it helps in networking, not just with potential customers, but also with potential suppliers and even potential competitors. So once you talk to them, it gives you new ideas. It helps you grow your business the way you want to. Every time I see the footfall is much bigger and larger than the earlier one. Now it has given a new edge to everyone. We have seen the people from all the segments and we got the right publicity for our product. Customer response is much greater than previous editions. It is not a regional exhibition, it is an pan-India exhibition. ऐसी एग्जीबिशन जो है हमारी कंपनी के ग्रोथ के लिए मस्ट है। First day was excellent and now also the footfall is very good. This year's exhibition has definitely been better than the last few. If you've not attended one of the exhibitions of hand tools and fastener, you're definitely missing out. This is a platform that's not only for the business or not only for the sale or not only for the making money. Here we are standing for to show our strength and to meet you all guys on the one. विशाल रहा मेरे लिए ये विजिट। नॉलेज बढ़ता है और बिजनेस तो जाहिर सी बात है, नॉलेज बढ़ेगा तो बिजनेस बढ़ता ही। ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम आके मिलते हैं और मिलने के बाद और बिजनेस में इम्प्रूव कुछ कंप्लेंट्स रहती है तो हम उसको डिस्कशन करते हैं और आगे के बिजनेस स्ट्रेटजी क्या होगी वो हम डिस्कशन करते हैं। जैसे कि ये एग्जीबिशन में आया है तो क्या है कि कोई बड़ा स्टॉल वाला मिलता है और उसको कोई नॉलेज मिलता है तो उसकी वजह से थोड़ा वो उसका बिजनेस में ग्रोथ कर सकते हैं। Here we can also have technical discussions also, have catalogs also, and also able to meet senior peoples of the companies. We come to know what all is available in the market, okay, and what are the competitive prices and what are the competitors. बहुत अच्छी जानकारी मुझे मिलती है यहाँ और बिजनेस का जो एक्सपांसन करना है तो यहाँ से हमको आइडिया भी मिलता है और बहुत अच्छी पार्टियाँ भी है। मैन्युफैक्चरर हैं उनसे डायरेक्ट मिलने को मिलता है, जो इम्पोर्टर हैं उनसे भी डायरेक्ट फेस टू फेस बात होती है और प्रोडक्ट के क्वालिटी के बारे में बात होती है, वरना एज रूटीन में जनरली मिलना इतना ईजी नहीं रहता है।